Okay, so this is the last session today, and the discussion would be related to questions. Any of the questions that you may have related to diet, any other question, anything which you would like to know from me. And if it is within my scope of knowledge, I would definitely answer. And again, the experience that you had throughout this 7 days. So it will include the diet that you have been following, the energy levels, mood, sleep, everything which is connected with gut. So I would like to hear from you one by one if you can start sharing your experiences, and question answers also you can keep asking in between. Yes. Yeah, but I really want. Okay, I Yes. want to start actually. So sorry, ma'am. Yeah. Because I have to leave also because I didn't had my dinner. I was just coming from somewhere. Okay. Yeah. So, starting I would like to share that I have reduced 2 kg weight in 1 week. Wow, that's Yeah, amazing. seriously, and my sleep patterns have changed. See, and nowadays I'm experiencing sound sleep, Okay. and even my skin started glowing. That we can see. That we all can see. Yes. So I got compliments from my husband, and it is actually very, motivation factor for me. Correct. And really, this 1 week I realized one thing, that you shared so much information to us, and it is a kind of a motivation for us that if we are eating, we know what is good or bad for us. Yeah. Like before we take diet, but we were unaware what is happening with the body, why we're taking this and why we're not taking this. So after your session, we came to clarity how a body functions and what are the foods we should prefer eating to maintain a balanced lifestyle and healthy lifestyle actually. So thank you so much, because I was seeking, actually it was my manifestation before also. I just want to know the fundamentals of diet, and you are the one, you came from the universe and you are sharing this beautiful information with all of us. Thank you so much. My pleasure, Parul, my pleasure. So I would request you if you can just quickly have your dinner, if you can rejoin, or just put off your video and then you can have your dinner. I will be putting my headphones and I will be doing and I will be listening each and every one, because everyone had their you can at least listen. journey. Listen to others. So I only have one question regarding stevia. Why it is good, even though it is sweet in taste? You told now that it is sweeteners and sweet things are not good for a gut. So why we are taking that? Why it is good to take stevia in place of sugar? Sugar, I know you told us, but what is the basic funda of stevia? Taking stevia. Stevia actually, though, let me tell you that all the sugar free which is available in the markets. So stevia was the first one. और स्टीविया के अलावा और भी बहुत से हैं, जाइटॉल, कल मैंने कई सारे आपको नाम भी दिखाए थे, एस्पार्ट में, all these are considered to be sugar free, right? Now stevia is the oldest one, or stevia has one quality that it comes from a leaf which is actually naturally very sweet. Or that leaf stevia, the name of leaf is stevia, and that is used to make this sugar free, which is stevia, which we use as sweetener. But thing is again that this is also processed. I'm not saying or I'm not promoting the use of stevia, but if you are suffering from, say, dysregulated blood sugar levels or insulin resistance or even gut issues, so as I have been telling from day one that we should cut down on sugars and carbs. Okay? So in that case, if you really want to have certain amount of sweetener, then stevia you can have rather than having jaggery, sugar, dates, because all are too high in sugar. तो वो जो हमारा misconcept है ना कि ये तो natural sugar है, so that is going to be good. Actually, frankly speaking, there is nothing called natural, because your body doesn't know that this sugar is coming from stevia, or this sugar is coming from fruits, or this sugar is coming from table sugar, which is sucrose. बॉडी में वो एक ही तरह से मेटाबोलाइज होगी, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. ठीक है ना? तो शुगर फ्री इज समथिंग विच विल हैव
minimum or nominal amount of sugar. Okay. So Yeah. I had sugar craving. Like Huh. first 2-3 days it was normal, but on the fourth day I was experiencing sugar craving after lunch, especially after lunch. It was Okay. not in the during dinner, but I had that sugar craving. Somehow I managed to just Hmm. not take any added sugar or something like that. But yes, I had. So what is the reason behind it? See, reason can be many. Sugar cravings are related to, again, dysregulated blood sugar levels. They are related to stress levels. They are related to hormonal changes as well. If you are on your PMS, then also you may have your sugar cravings. The best thing to take when you are craving for sugar is just take a piece of fruit. That is any which way is better than anything else. So these days we are having mango season. मैंगो का एक आध पीस आप ले सकते हो आफ्टर लंच, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. मैं हमेशा से ये बोल रही हूँ कि फ्रूट्स को भी ट्राई टू टेक देम एज योर डेजर्ट्स. दैट मीन्स आफ्टर योर मील्स, नॉट एज अ स्नैक. बिटवीन मील्स ना लेके आफ्टर योर मील्स यू कैन हैव, और अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट इज ऑल्सो फाइन इफ यू आर नॉट डायबिटिक, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब शुगर कंटेंट नहीं होता है. 70-80% इट इज डार्क चॉकलेट ओनली, दैट यू कैन हैव. Okay. Yeah. Okay. Even a Thank you piece so of much. even a piece of mango is okay for diabetics also, जब वो मील के बाद लिया जाए, क्योंकि मील के बाद लेने वाला कोई भी कार्ब या शुगर जो है, इट डजंट स्पाइक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल. वो आपके ब्लड लेवल को स्पाइक नहीं करेगा, एंड दैट स्पाइक इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर एनीवन, इवन फॉर नॉन डायबिटिक्स. ठीक है. Yeah, okay. Thank you so much. Thank you. मोस्ट I वेलकम. will be joining. I हाँ will हाँ, be in आप Zoom. ज्वाइन करना. वी विल हैव अ ग्रुप Thank you. लेक्चर, तो बी देयर. ठीक है. यस But मैम. what about, can I ask you one thing related to this? Ma'am, I think let me just go first to Charmaine ma'am. She was waiting. Okay, yeah. Yeah. It's okay. Yes, It's okay. If she wants to go ahead, let her go. I can wait. Go Acha. ahead. No, As it's you- regarding the fruit only. Acha, I okay. just wanted to ask, like many people say that not to have it after dinner. So Hmm. what time can we have fruit after dinner? Yeah, so actually, fruits have like they shouldn't be consumed after evenings, right? So that is very rightly said. Even Ayurveda also says that it shouldn't be consumed after dinner. So the right time to take any kind of fruit would be after lunch only, or as a part of your smoothies in breakfast, like I have given once or twice. But All again, right. the portion size should be minimum. It should, मतलब जो अभी तक हमारा myth है ना, misconception है कि we can have as much as fruits as we can, as we want to. That is Yeah. actually wrong. Because Okay. I will share one video with you all where it has been given that fruits में जो fructose होता है, that goes directly to liver. And you all won't believe that that is the major reason for all kind of fatty liver diseases these days. The non-alcoholic fatty liver disease is actually connected to this. एक तो आपका अल्कोहल की वजह से लिवर में प्रॉब्लम आता है. The other kind of problem is due to excess of fructose. Insulin resistance is obviously one part, but fruits का जो sugar है, which is fructose, it directly goes to liver for metabolization. तो वो which इसीलिए जो लोग सिर्फ फ्रूट डाइट करते हैं या पूरे पूरे 2-2 3-3 दिन they are having only fruits, that is actually bad. Just have a small portion, 100 grams or 150 grams, that won't be harmful for anyone. So after breakfast is the safest. Yeah, breakfast and even lunch also, because these days we are having mangoes, no? So mangoes are, as it is considered as a dessert only. Okay. You can have a piece of mango after lunch. Thank you. And Thank ma'am, you. your experience for the diet, were you doing it? For me, Yeah. see, Did you I have a follow? lot of, it's not, I have a lot of bloating and a lot of swelling around my eyes. So that is because my urination, I have a problem with my urination. It is, sometimes it is more, sometimes it's very irregular. So for that reason, of course, I did find a little difference. Not very Obviously, it will not be magic. yeah, but yes, of course, I did find it a little difference. And of course, no gas, no burning. That was completely stopped. And I did not have smelly farts.
but I used to have like this farts without Regular. any smell or anything. Yeah. So that is completely stopped. I've noticed today that I'm not doing that anymore. That's Plus, I did lose around 800 kgs of weight. wow. That's amazing. So So it's actually, good. yeah. So this was weight loss was actually the side effect of this diet. Yeah, yeah, yeah. Weight loss was not the major purpose or aim. The aim was to cleanse your gut, basically. Cleanse that. Yeah, Yeah. yeah. So And I'm not feeling at all any any kind craving of for craving. food or anything. I'm feeling full and good. Like, yeah. That's good, ma'am. And Thank you so much. if you would continue this, say for 2-3 weeks, so all other issues, as I have shared in the yesterday's lecture also, that this kind of diet, if you follow for at least 3 weeks, so then only you will get to see the actual results. Okay. Because Okay. 2-3 weeks, matlab it takes that much of time. All right. So All you right. can repeat this diet again. Yeah, I'll do that. I'm And you going can to continue. you can keep changing the options in the form of, say, vegetables. वो आप Yeah. change कर सकते हो accordingly. Right, right. Whatever you All want. these vegetables I like. So for me, it was no issue, having this हाँ. lobbies and And tindas and everything. even seasonal vegetables are always good to consume. Whatever Yeah. is available in your area, locally, seasonally, that is good to consume. There's Yes. no Yes. problem in veggies. Yeah. And Yeah. also, everyone has to keep a check on that acid alkaline thing which I had mentioned. So whenever you Right. are consuming something which you think, because मैंने आपको दिखाया था कि proteins, carbs, ये सारे क्या हैं, acidic हैं. Even your grains are acidic, dairy products are acidic. So whenever you are consuming any kind of acidic food, just try to compensate with equal or more amount of alkalines. That is the best way to keep your body on the alkaline side. And if your body is on the alkaline side, everything will be good. Basically, जैसे कहते हैं ना कि सी वाटर होता है, लाइफ फ्लरिशेस देयर बिकॉज इट इज Yeah. एल्कलाइन. लेकिन जब वो एसिडिक ज्यादा हो जाता है एनवायरमेंट, तो सारा कुछ मतलब खराब होने लगता है. एवरीथिंग बिकम्स डेड. सो सेम गोज विद बॉडी. So here we can compensate with the alkaline water also if we are Ma'am, not having water is suppose one food. part of it, but definitely if you are including more and more vegetables in your Then diet, it is fine. that will also give you fiber content, that will also give you many kind of micronutrients, because water will have electrolytes, that's true, but जो आपके micros है, magnesium, phosphorus, potassium, calcium, iron, everything you will get from veggies. Okay. हाँ, so that is Okay. why vegetables use जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ज्यादा you will be better. Thank you so much. Thank you for this diet. My pleasure. This is the best diet I could have Thank because you अब so तक मुझे much. कभी भी dieting अच्छी नहीं लगती थी, but ये dieting लग ही नहीं रही है. This is not like you're having some diet food, Yeah. and the roti is superb. So The- keep continue eating that. Yeah, yeah, yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jamin. Yeah, Amos, thank you very much for this this diet plan Thank you. and for educating me on foods. We've grown up just accepting all kinds of foods and I'm eating them, Yeah. but and I didn't know the difference between prebiotic and probiotic. Okay. I had no idea. The only probiotic stuff I knew about was yogurt. Yoga. Have probiotic yogurt when your stomach is, out and to help you and all. But besides that, I don't know anything about probiotic, even foods. I didn't know there were such foods and prebiotic. And I must thank you because it's helped me and it helped me in my diet too. Of course, it was a bit hectic for me Yeah. because tiring. Prepare everything. Yes, yes. Prepare I can everything, understand. and, Yes. because it's not just for me. I have to also make my for my family. husband, and so it was very hectic. Yeah. And by the end of the day, I was very tired. That I night sleep, I must say. Whichever way I do because of the diet or because of my tiredness. But my gas has improved. I've noticed. Of course, I didn't have like smelly farts as Anita said, but I used to have gas. I mean, during the day and even like after food sometimes.
And I mean, is it natural when getting a stool to get gas, or is it unusual, or is it not Pardon your normal? question, ma'am. Pardon your question. When we are getting a stool, is it natural to pass gas? Yeah, it's Or is completely it natural. unnatural? No, it's completely natural. There is no point. The only thing is that if you have that small intestinal bacterial overgrowth, then you would have smelly farts. But apart Okay. from that, usually if you are having some farts after meals, like when you are walking or doing something, then it is usual. Okay. Yeah, there is no issue. Yeah. And how about after water or something you burp? Is it natural, or you burp? So burping is totally natural if it is just say for once or twice. If you are getting 8, 9, 10 continuous burps, then there must be some issue. Okay. Otherwise, it is not normal. Yeah. Okay. And also I realized that I can do without tea, I always thought that I could never do without tea or coffee. I used to hardly have, just Yeah. occasionally. But tea was like a must. So when now during these the diet days that I skipped my tea morning and evening, not in between, just 2 cups, but morning and evening was like a must. I craved for it. Or when evening came, okay, I have to make tea and have tea, and then snack with it, a little bit of snack. But I've stopped that as well. I don't. That's No, great. I crave because I see my husband having something, and then I I said, no, I'm not supposed to have. And he said, you like? I said, no, don't show me. I'm not supposed That's to have. good to know. So Yeah. it's natural to have something with your tea. So like some biscuits or And sometimes try to bhura. avoid the biscuits. Rather, you can Yeah. have some roasted nuts, or Okay. or if you want, you can have little bit of peanuts, that lotus seeds makhana also, but very small Okay. portions. Okay. Even Okay. roasted seeds are fine. So again, Yeah. I would say here is that biscuit is completely Yeah. carbohydrate, grain. So it will have some, even oats biscuit, which are called to be like digestive biscuits, they are Yeah. also full of carbohydrates, which are not. Okay. So go for So some good fats, nuts and yeah. seeds. Roasted chana is also okay to Okay. an extent. Yeah. Right. And of course, I always it was a custom kind of after food, we would have a little sweet, just Uh-huh. it was very I wouldn't say Difficult. but yeah, it just came naturally after some time, after having our food, then we would have a bit of chocolate or some sweet or some, halwa, if there was some halwa or a little Yeah. sweet. But we had to sweeten our mouths after food. But Mhm. surprised that I managed without it. That's great. Yeah. That's So great. I realized that we can do without things when Yes. we are, we are supposed to, or we are on a diet. But do Yeah. we have to do without carbs completely? I mean, completely, or can we have like potatoes sometimes, potato dish, Ma'am, you are already bhaji? you are already having a lot of carbs in this diet also, because as you can see in the flour itself there was that jowar flour that is also having Like, carbs. Besan is also having carbs. All the vegetables are having carbs. Obviously, they are good source of fiber, but they are carbs only, right? Even yeah, fruits are carbs, quinoa, oats, milk, everything is carb. So the approach was to reduce the amount of carbs that we daily consume, because our body doesn't require that much of carbs. okay. Yeah, and that is why we are actually trying to disbalance the gut microbiota, because we are having lot of carbs and sugar. Okay. And if you are consuming lot of carbs and sugar, you will crave for more.
That is why, as you said, that there were not so much of cravings because you were already consuming less and less of them. जितना ज्यादा खाओगे आप उतना ज्यादा क्रेविंग होगा बिकॉज तभी तो लेस के पैकेट पे भी लिखा रहता है ना, यू कैन नॉट ईट जस्ट वन बिकॉज because that is the marketing gimmicks only. You can't just have one piece of chocolate, you can't just have one piece of chips because एक बार आप खाओगे there is some kind of thing which is like addiction. It's very addictive. बहुत addictive होता है. And I am forgetting the name. There is one enzyme and hormone which is involved in this. When you are taking dopamine. Dopamine is there. Yeah, dopamine is pleasure hormone, but इसका एक और technical चीज है कि जो कि release होता है when you are having high fat and high carb together. So मैं बताऊंगी आप लोगों को. I am just forgetting the name. High carb और high fat जब हम एक साथ consume करते हैं, so there is one such thing which is released, and that is how you crave for more of that. And you know what? This afternoon, I realized I have never been able to make a Chinese chili chicken without corn flour and without soya sauce. Okay. But today I was saying, now, how will I make it without these things? Because you require it. It's a must. You know, Chinese food, soya sauce. There has to, but I managed. I don't know how it'll taste, but kind of manage. And I realized that you can if you try out. It's a trial and error thing. And as you said, no soya and corn flour. Do we have to abstain from corn flour? Ma'am, thing is that during these 7 days, I tried to keep the processed foods, the sugars and carbs and everything as less as I could. Okay, but you can use it. But yeah, so once in a while it is okay using, because if you are making any gravy, you hardly use 1 or 2 teaspoons of corn flour. So that is absolutely fine. There is no problem. Right. Yes, Sheetal ma'am, I think you raised your hands. Sheetal ma'am? Yeah. Yeah, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. First of all, thank you very much for all the inputs. You've been amazing. You've been very patient. God bless you. My pleasure. And despite you kept on telling me it's not personalized, but it was kind of personalized. You made it personalized to me. And I have not been following it very regularly because I told you, as such, I don't have any gut issues. But one question I had was, like, before 5 years, I turned vegan. It wasn't that I was lactose intolerant. I could digest everything very well, but just that cruelty concept and, all that, a lot of reading and all that. So, and now I cannot digest milk after I left it. Now even if I left milk, paneer, and I told you I still eat ghee and I'm going to eat ghee forever. I love ghee and ghee is very good. So I wanted to know that once we leave gluten, so is it likely to happen that once I stop it, I love my rice, also, frankly, white rice, brown rice. So if I stop eating rice, will it be like that? If I eat few days, I won't be able to digest it, gluten, as what I'm experiencing it with lactose. Earlier, I could digest everything, milk, paneer, that kharvas, if you know, that used to be my favorite. You know kharvas? No, okay. It's a dish which is made from the milk of cow just after the delivery of the calf. That thick milk comes and you make a sweet dish out of it. That used to be my favorite. So now, I had not had for 5 years, but just I really felt like having. So I got the chicken and made it home. But still then I was so gassy and otherwise I have no such issues. But now I've seen whenever, like in parties also, if I a little bit of paneer out of no choice, because I don't want to trouble anyone, because just because I'm vegan, I don't want to tell everyone to make, something paneer free. So I sometimes, if I have to have, so I've seen that I cannot digest it. So will that be the case in your opinion with the gluten also the same? If I leave gluten completely, then what I can say is I believe the other way around.
If you are leaving gluten, so that means, and it with leaving gluten, you are getting better in gut symptoms or issues, then that means you had some issues with gluten, which not, almost 80-90% people who are having gut issues would have. That is why the first approach and the basic approach for gut issues is to stop gluten for some time. So I don't think so that you would develop that resistance to gluten if you stop eating. But as I shared in the yesterday's class only, that try not to take something for 2-3 weeks and then reintroduce it by having 1 or 2 servings 2-3 consecutive days. Okay, okay. I don't think so that gluten is going to. I'm actually surprised to see this thing that you have just talked about. Yeah, lactose, yeah. So you were not lactose intolerant, but now you have become. So in case I would get to know something more on it, I would definitely let you know. Thank you so much. Thank you. All right. Yes, ma'am. You are not audible. Just please unmute yourself. Yeah. Yeah, hello, doctor. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Yeah, although I'm not following so much because of my traveling schedule and so much hectic the work schedule these days, but Okay. still I managed to make that floor, and 2-3 times I'm having that chapati for 2-3 days. I Okay. did that, Okay. and sometimes if I'm not able to have my home food, then I skip the meal. So is it the right choice? I mean, is it the right If option? the meal means you don't take anything. No, just saying salad or something. And Salad, and I think you are talking about dinners only, skipping dinner. dinner, So yes, try doctor. to avoid raw food, especially during dinner. If you are Okay. having any kind of gut issue, वैसे भी gut issue में थोड़ा raw food, मतलब raw vegetables का consumption कम रखना चाहिए. But Yes, I have. during the day it is still okay. Okay. Right. So try to have soups or stews if you are Okay. missing out the dinner. Okay. So, doctor, yeah, I have gut issues. I have explained my problem also. Yeah, and I comes between that 11 and 35, Okay. Yeah. So my main concern is, can I, alternate this diet with rice? Because as I'm going to next month, I'm not only this month, I'm going for 1 month to abroad. Okay. So can I make alter with something like this so that I can, manage something with Ma'am, brown actually, rice? rice, I would not recommend. Rice is something which is actually a good, though it is a prebiotic, but again, what is your basic issue? Gut issue, constipation. No, Bloating. not so much constipation, just sometimes not regular, but sometimes it's bloating, and my burning starts, and then when I stop the food, then it becomes settled by itself. So that is the problem with low stomach acid, right? So in Yeah, that but case, sorry to interrupt you, Yeah. doctor, but when I eat rice, it gives me, comfort. That I understand. The thing is that rice is actually lighter to digest. Also, it is like kind of cold in potency. तो वो आपको कहीं ना कहीं relief देता होगा, but long term में bloating के लिए that is not actually very good. Because it is full of glycemic load. बहुत ज़्यादा carb rich होता है rice. And again, we have to cut down a little bit on carb and sugar load if we want to resolve the gut issues. Okay. So once in a while you can have, if you are able to get quinoa, that is a better option. Yeah, quinoa can have. Yes. So quinoa with some sauteed veggies, soups, that is okay. Grilled paneer is still fine. Are you a vegetarian or? Yes, I'm vegetarian with eggs. Eggs. So you can even have some kind of dish of egg, boiled egg with sauteed veggies, or an omelette with full of veggies. So in dinner I can. In dinner I can take these eggs. Yes, and yes, definitely. Okay. No issues. Egg जो है वो मतलब it is being like उसको देखते हैं हम ऐसे, it is conceptualized as being heavy or it would not be digested well if we take it in dinner, but that's not the case.
So you can have eggs, but as I said, acid alkaline balance needs to be maintained. So again, egg is the rich source of protein. Protein is acidic. Try to compensate with some kind of veggies. Veggies, right. So Sauteed which kind veggies. of veggies should I use in the dinner, doctor? Ma'am, normally you can use any veggie, but if you feel bloated after consuming, say, cruciferous veggies, especially the cauliflower, cabbage, green peas, also, though it is not cruciferous, but these are the veggies which normally make people gassy, right? So if you observe these kind of symptoms after consuming these, so try to avoid, rather go for green veggies, capsicum, then that bottle gourd, even No, आजकल जो भी season है. capsicum gives me trouble, doctor. It gives so me you trouble. can avoid it. Actually वही चीज है ना कि you need to do the trial and error. थोड़ा सा you need to observe your symptoms, because generalized नहीं है. Nothing is generalized. किसी को कोई चीज नहीं सूट करती, किसी को कोई चीज नहीं सूट करती. लेकिन gluten and dairy are two things which are actually everybody, most of us are resistant. Okay. So that is why जैसे इस diet में there is no gluten at all. राइट तो उससे कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा, आई एम श्योर, क्योंकि 80% गट इश्यूज आर ड्यू टू ग्लूटेन. But doctor, as you said earlier, that rice are also gluten free. So I actually really I can't understand why it's not Ma'am, in our see, diet. all gluten free things are not good. That is what I am saying. See, gluten free is something else. Gluten free का मतलब है wheat, rye और barley. तीन चीजें हैं which are rich in gluten. So wheat में आपका semolina सूजी भी आ गया. Then it will also have the white flour, मैदा. ठीक है, everything will be part of it. Gluten free is everything else, including your millets, including your lentils, pulses, legumes. ये सारे भी तो gluten free हैं. But all of them are not good for gut because they are again sources of carbohydrates. So you need to cut down on your carbs consumption also to give kind of healing touch to your gut. That is Okay, what doctor. Thank you very much. And in case, as you said, you are based in Noida, so when I come to Delhi, can I have my personal session with you? I mean, can I sure, take a... no issues. Okay. Anytime, ma'am. Most welcome. Okay, thank you very much, Thank doctor. you. Thanks Thank a lot. you. Yeah. So I can go with this diet when I am in abroad. These, as you said, that quinoa, veggies, Oats and also sometimes. You can keep changing the meals, but try to reduce the quantity of carbs. And rice, obviously, matlab everybody knows it is the highest and richest source of carbs. When we talk about grains. But what should I do if if there is some social I kind of understand. Correct. gathering? You cannot So, follow everything outside home. But ठीक है, try to keep it as much as possible. जितना कर पाओ आप, that is good. okay. Yeah. Quantity should be less, isn't it? Try to reduce the portion size at least. Include more of vegetables and less of grains. Thank you very much. Thanks a lot for My your all pleasure, guidance and Thank you so information. much, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Any other experience sharing? Who would like to share? Kindly unmute and yes, Jasbir ji. Please go ahead. आप अपने को अनम्यूट कर लो. हाँ जी. हेलो, कैसे हो? सब ठीक है, आप बताइए. बस अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी. जी जी. मैंने तो वैसे भी पहले आपका डाइट लिया हुआ है, तो मैं तो पहले एक्सपीरियंस हूँ. बट और सब नए नए मेरे को बस ये नए नए अच्छा लगता है लेके सब जानना. मेरा तो वैसे भी कुकिंग फील्ड है, तो आपको पता ही है कि मुझे ये सब जानना, अच्छी अच्छी रेसिपीज, ये सब मुझे अच्छा लगता है. जी जी जी. तो जितना नॉलेज में बटोर पाऊँ आपसे, उतने बटोरने की कोशिश करती हूँ और एंजॉय भी करती हूँ. और बाकी वैसे रूटीन में तो अपन खाना बनाया खा लिया हो गया, बट ये आपके संग जुड़ के ऐसा स्पेशल फीलिंग आती है. फोटोज खींचते हैं, रूटीन में नहीं, पर जब आपके संग जुड़ती हूँ तब तो खास करती हूँ मैं. अच्छा लगता है. और ग्रुप ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे लाइक किया, मेरे पोस्ट को लाइक किया. आपके प्रेजेंटेशन के तो सब लोग बिल्कुल कायल हो गए. Exactly, Jaspreet ji. You are really amazing.
हाँ, I, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंट, हर चीज इतना अच्छे से प्रेजेंट करती है कि इवन द डाइट फूड लुक्स सो टेम्पटिंग कि मन Where are करता you है बस from, खा लो। Jasmeer ji? Where, where, where are you from, Jasmeer ji? हाँ जी। थैंक यू सो और मच। बाकी जब मैंने आपसे आज से 2 साल पहले जब डाइट लिया था अपनी तकलीफ को लेके, मैंने कितने सालों से खटाई बिल्कुल नहीं खाई थी, अचार दही ये सब नींबू मैं भूल गई थी खाना, क्योंकि मुझे सूट ही नहीं होता। मुझे ऐसा था मुझे सूट नहीं हो रहा है, मेरे पैर दुख रहे थे, मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे, मुझे एसिडिटी हो रही, माइग्रेन हो रही। बट जैसे जैसे आपकी डाइट लिया और सब कुछ खाना स्टार्ट किया, तो अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई चीज की एलर्जी नहीं है। ये बस टाइम, मुझे ये पता चला कि मेरी तासीर क्या है बॉडी की और मुझे कौन से टाइम पे क्या खाना है, क्या खाना है। वो सब आपसे मुझे पता चला। तो आज मैं सब फूड एंजॉय कर पा रही हूँ। चलो दैट्स गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जसबीर जी कहाँ से है? जली से है? अहमदाबाद। you अहमदाबाद। are giving us hope, Jasveer ji. You are giving us hope to get for a she's better now a health. very good friend also. बहुत Ah, टाइम great. से इनके साथ मेरा एसोसिएशन है, तो अब हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए। यस ललिता मैम, व्हाट डू यू वांट टू से? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, ma'am. I had not been able to attend two of the classes, as I had already informed you. हाँ हाँ, But I have one question to ask. I had told you I would be doing it from Zam. I'm busy till Saturday. I had one question to ask in your second session. I saw the recording. ओके। Uh, Section C, question on good habits. हाँ, Question 1, you say 2 servings of vegetables has 4 points, 1 serving has 3 points, and then again you say 3 to 6 servings has 2 points. So I did that is not per understand. week ma'am, that is 3 to 6 servings per week, not per Okay, day. okay, Yeah. okay. So the 2 servings are per day, is it? Yes, yes. Okay. Okay, ma'am. Uh, Thank you. Okay. yeah, so sorry, doctor. I just interrupting. Yes, yes. So I mean, a small bowl is enough with 2 servings, two We vegetables. try to have at least 100 to 150 grams of a vegetable serving per meal, at least, and try to have 4 to 500 grams of vegetables per day. Right. ठीक है, मतलब कम से कम बता रही हूँ, इतना कंजम्पशन रखिएगा तो यू विल बी एबल टू मेंटेन योर अल्कलाइन बैलेंस। उससे ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली इट इज गुड if your gut is able to digest. So better is to just have boiled or sauteed veggies rather than consuming raw. Raw is only fine with lunch or as much as you can have in vegetable smoothie. That is okay. But especially after 5 or 6 in the evening, try to have them in the some kind of like boiled, sauteed or cooked form, not raw. Thank you, doctor. Yes, Lalita ma'am. Lalita ma'am. हाँ डॉक्टर, आपने बोला था कि फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, जी तो जी फर्मेंटेड फूड में इडली डोसा जो मतलब जैसे कि ये राइस का बना है, तो जी उस जी। फर्मेंट होने के बाद राइस ज्यादा सिंपलर हो जाता है टू डाइजेस्ट। देखिए मैम, एक्चुअली क्या है ना कि फर्मेंटेड फूड जो है वो मैंने प्रोबायोटिक का सोर्स बताया था। सो प्रोबायोटिक जनरल गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। सो अगेन उसमें भी मैंने कल ये चीज डिस्कस किया था कि अगर आप उसको ओवरनाइट फर्मेंट कर रहे हैं देन ओनली इट इज गुड। मतलब नॉट यूजिंग सोडा और इनो फॉर फर्मेंटिंग, जो आजकल इंस्टेंट वाला बनाते हैं लोग। ओवरनाइट इफ यू आर कीपिंग इट फॉर फर्मेंटेशन तो वो नेचुरली उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना, तभी तो वो फर्मेंट होगा। So it is good, but again it is rich source of carb only. So who says that South Indian food is very, very good for health? It is not. It is also a rich source of carb. सारा कुछ उसमें आप जो डाल रहे हो that is only carbs. But yes, since it is fermented, it is better. So यहाँ पे ना relative आपको देखना है कि कौन सी चीज किससे थोड़ी better है। जैसे अगर मैं कहूँ तो राइस से better wheat है in terms of carbohydrates. मिलेट्स आर बेटर देन व्हीट बिकॉज मिलेट्स में थोड़े से और कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट अगेन नट्स एंड सीड्स या जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करें तो दे आर बेटर देन एवरीथिंग, दे आर बेटर देन ग्रेन्स।
ओके ओके। और आपने ये भी बोला कि खजूर मतलब कोई भी टाइप का ड्राई फ्रूट सॉल्ट जिसमें शुगर लेवल है ज्यादा है वो नहीं खाना चाहिए। मैम ड्राइड फ्रूट से मेरा मतलब था जैसे कि यही हम खाते हैं डेट्स एंड ऑल, ठीक है, बिकॉज ये कोई फ्रेश फ्रूट तो है नहीं, दिस इज प्रिजर्व। प्रिजर्व से भी मतलब नहीं है, चाहे वो आपका एप्रिकॉट हो, चाहे जो आपके ड्राई एप्पल्स होते हैं, या फिर क्रैनबेरीज हैं, रास्पबेरीज हैं, आजकल मिलने लगे हैं ना ड्राइड फॉर्म में, हाँ हाँ। दे आर एक्चुअली वेरी वेरी शुगर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसमें जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, भाई फ्रूट क्या है, फ्रूट में वाटर भी है, ठीक है, और Yes. शुगर भी है, लेकिन जब उसको आप सुखा देते हो तो वाटर तो चला जाता है, खाली शुगर ही शुगर बचता है। तो इसीलिए उससे तो बेटर है कम से कम कि यू ट्राई टू हैव दी फ्रेश फ्रूट रादर देन दैट ड्राइड फ्रूट। ओके यस। एंड मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगी कि मेरा 1.5 kg कम हो गया है एक तो। ग्रेट। और गट इश्यू तो मुझे इतने नहीं थे, लेकिन मुझे फ्रेश लग रहा है। और पता नहीं मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी स्किन में थोड़े से मतलब डिस्कलरेशन, मतलब थोड़ा सा नॉट पिगमेंटेशन बट ब्लैकिश हो गई थी, वो क्लियर कम हो रहा है। हाँ कम हो रहा है, वो मेरे को महसूस वो हुआ है। होगा मैम, आप लंबे टाइम तक करो, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा। ओह ओके। Because this बट is वेरी also गुड। related to sugar load only, which is glycation बोलते हैं हम लोग। वो हाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्चुअली डायबिटीज का कॉन्सेप्ट है। बट हाँ वो जो पिगमेंटेशन साइंस होते हैं ना, दैट इज ऑल, दे आर ऑल्सो ड्यू टू दैट हाई कार्ब कंजम्पशन। या तो आप क्योंकि ये करोगे, कम करोगे कार्ब लोडिंग, तो अपने आप ठीक हो जाए। ओके ओके ओके। और डॉक्टर साहब मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी ऐसे होती है या साइनस, मतलब एवरी डे आई हैव टू टेक एनी एंटी एलर्जी टेबलेट, नहीं तो फिर वो रहेगी रहेगी। तो विल दिस डाइट हेल्प मी? और यस मैम, डेफिनेटली इट मे हेल्प। उसके साथ आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने ओके थोड़ा थोड़ा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा कुछ नर्व्स का खेल है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप जब नर्व्स को रिलैक्स करोगे, थोड़ा सा और गट में ही इम्यूनिटी है, तो अगर आपका गट स्ट्रांग है तो इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग रहेगी। तो आप डेफिनेटली अगर आप करोगे ऐसा डाइट अच्छा फॉलो करोगे, गट को ठीक रखोगे, तो इम्यूनिटी लेवल्स भी बढ़ेंगे। ओके ओके। Thank you, and थैंक यू thanks मैम। for very थैंक यू informative मैम। this sessions and diet. Diet Thank you was so too much, good, too ma'am. good. Yeah, Yes, thank you. Mukta ma'am, you are raising your hand. Please unmute yourself. I wanted to ask you, like for the night, in the night, I used to have steamed spinach. Is that Okay. all right, or is that not good instead of a portion of vegetables? No, spinach is absolutely fine if you are able to digest it. Because again, it varies from person to person. कुछ लोगों को spinach खा के थोड़ा सा bloating और gassy होता है, ठीक है? But Yeah, if you are okay with it, there is no problem. Leafy vegetables are all okay. Okay, yeah. So then, because I normally do that, or either it's steamed or little sautéed with garlic. Anything So either will do. or. हाँ, anything So will do. क्योंकि देखिए, okay. चाहे आप उसको बस रॉ, मतलब ऑब्वियसली स्पिनच तो कोई भी रॉ नहीं लेता है, लेकिन हाँ. किसी भी तरह के कुक्ड फॉर्म में खाना इज मेक्स इट मोर डाइजेस्टेबल। Okay. All right. Okay. एंड That's योर what I wanted. एक्सपीरियंस में मैम? So, like I told you, I was fasting, so I was doing only the अच्छा, breakfast okay. and the dinner. हाँ. Yeah, so I was missing the lunch part of the program. But Okay. like I told you that, normally when I fast, I used to get severe acidity. That was a complete no-no in That's these nice. 30 days. I mean, and towards the end, it used to be really bad. But I did the diet in the end, the last week. Like today's the last fast, last day of the diet. So Yes. the acidity wasn't there. Bloating, of course, immediately reduced. I'm feeling lighter. I was more active. Great. Normally I used to get sluggish. I mean, I'm fasting also, no water, but I used to get sluggish at around, like 4:35, but I was able to continue working till about 5:30. So I think that also helped.
So only thing I have now, like you told me, I should do some testing for the small intestine because I have that burping that hasn't stopped. Stopped, right. So You told me. yeah, so I just need to do some testing to get that sorted out or continue this diet. Like I told Yes. you, I'll do it for 1 week next week. Next, yes, that would be Like better. a proper, the breakfast, lunch, and dinner. Correct. Yeah, and before doing anything to see, what Yes. the So whole thing rather, is. I would suggest you to go do this diet at least for 2 more weeks before going for any kind of testing. Okay. Okay. Yeah. So that's what I was telling you, that, I would have to do this diet properly because I've been skipping a lunch and you also were skipping. reduced water. Yeah, So, yeah. So that way I thought that if I do it from Monday to, the whole week next week, I would be in a better frame to give you what my outcome is then. Yeah, definitely. Yeah, so thank you very much. It was really an eye-opener, lots of knowledge, and I really compliment you on the way you've held all your sessions and the way you put this whole diet together. And of course, I love the rotis. I'm going to continue that continuously. Yes. Keep continuing that. It will definitely like yeah. Yes, Vaishali ma'am. Hi, Anubhaji. How are you? All well. Yeah, and I one think more I've thing said is, everything one more on thing is, the message, maybe, I've expressed everything. But still, I Ah. would say that I have lost 1 more inch-wise. I have Wow. really lost, and I'm really feeling so good. I can't tell you. And My God. believe me, for this diet and all that, I can approach you anytime and I can trust you. And I just want to ask you one thing. I feel craving of chocolates only after dinner, but Okay. that is like I can still manage not to eat that. But you said dark chocolate is okay to have sometime if like Just a piece or two is fine. Yeah. yes. And if I feel little hungry, like after dinner, between you can say I have my dinner around 8 o'clock, and 8 o'clock or 10 o'clock between. So can you recommend something very light or something which I can just have in case if I feel hungry or Ma'am, ideally, तो you should not feel hungry, especially dinner or sleeping time. अगर if it is 10 or 10:30, मतलब fine. unless you are awake till 1:12 a.m. or 1 a.m., then तो I can imagine कि आपको भूख लग सकती है. But अगर आप 10 o'clock या 11 o'clock सो रहे हो and you are having your dinner by 7:30 or 8, then there is no chance of getting hungry. That means Yeah, I got you. either you are not taking the full portions which have been recommended. Okay. So you are taking less fiber. जो आपको मतलब दिया है डाइट में फैट और फाइबर अगर आप इनफ ले रहे हो, so fat also makes you full for long, unlike carbs which are very easily absorbed, digested and absorbed, and we feel hungry after 1 or 2 hours. That is why you all are saying, देखिए एक सबका जो observation है which is very common to all, कि fullness लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है. That is because you are eating healthy fats. Even in your flour, there are fats, right? And fats will keep you full for longer. Unlike carbs. Carb रोटी खाओगे तो 1 घंटे में लगने लगता है कि भूख लग रही है. ठीक है ना? इसलिए फैट्स को क्योंकि ब्रेक डाउन होने में और एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है. कार्ब सबसे जल्दी हमारे ब्रेक डाउन हो जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड. Okay. That is And thank you so much for even giving me the options of Jain food. I really enjoyed, and believe me, everything is new for me. Each and every recipe is new for me, and I'm really enjoying it. Thank you for such a wonderful journey. Really, thank you so much, dear. Yes, Jasbir ji, you want to say something? हाँ जी. मुझे ये कहना था, अब मैंने छोटा टारगेट रखा था कि इस बार चाय कम करनी है, वो मैं कर पाई हूँ. और दूसरा, मेरे को ये जो खाना खाने के बाद शुगर क्रेविंग था, तो कभी मैं कुछ खाती थी, वो भी मैंने फाइनल से रिप्लेस किया है. चलो, दैट्स सादा फाइनल, शुगर वाला नहीं, सिंपल. ठीक है. और बाकी अब मुझे चाय कम करनी है. कम तो हुई है, पर मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता है आदत नहीं होनी चाहिए ऐसा. तो उसको मैं मिल्क के संग ले सकती हूँ. सुबह के टाइम में थोड़ा सा मिल्क ले लूं, चलेगा क्या? देखिए चलेगा. बात वही है कि कोई आपको लैक्टोज से इंटॉलरेंस तो है नहीं, तो चलेगा तो है ही है. हाँ, जैसे वो चाय मिक्स डाल के हम चाय बनाते हैं, वही चाय मिक्स डाल के दूध बनाकर आधा कप या कप जितना सुबह चाय की जगह ले लिया करूँ,
तो चलेगा वो? हाँ, आप ले लो, बस मतलब वही है कि थोड़ा पोर्शन साइज कम कर दीजिए। पहले आप 1 कप लेते थे, अब उसको हाफ कर दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा सा जितना कम हो पाए, तो उससे ये रहेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा कि हाँ हमने चाय पी ली, और उतना ज्यादा वो नुकसान भी नहीं करेगा। हाँ। और बाकी ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी तो वो सबको पसंद आ रही है, वो लास्ट वर्कशॉप में भी एवरीबडी एंजॉयड दैट। अच्छा चलिए, अब नाउ आई विल हैव टू शेयर माय सरप्राइज विद यू ऑल। सो वन सरप्राइज, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक दिया, वेरी नाइस कमेंट्स आई हैव गॉट। सो let me just give you one surprise. So I am giving 3-4 prizes. So 500 worth of voucher from my side to 4 people out here. So category 1, the most active and dedicated participants. So those who were following the recipes, attending sessions, sharing pictures and asking questions, and also getting results. So that means they have been following the diet. That is why they got the results, right? And category 2 is for best presentation. So I think this, all of you would know that this award goes to whom? Any guess? Jasbir. Jasbir. Yeah. Jasbir. ये लास्ट जो मैंने गट रीसेट वर्कशॉप करी थी उसमें भी इन्हीं को मिला था, क्योंकि इनके अलावा और किसी का उतना अच्छा होता ही नहीं है कि और कहीं मैं सोचूं। So best presentation goes to Jasbir ji, and 3 winners in category 1 are Parul Gupta, Lubna ma'am and Charmaine ma'am for active participation and for sharing the pictures, following the recipes and getting good results also. Thank Wow, you. thank you very Yeah. much. Didn't Thank expect you. it. Thank you. Yes, Congratulations to all. congratulations to all. Thank you to very all. much. As I It's a said, big this is, surprise. yeah, so this is a voucher which is applicable on my diet plans and all my packages, and this is valid for 3 months from today. That means till 20th of July 2023, right? Yeah, thank you. Thank you so much for actively Thank you very participating. Doctor, Parul one is thing there? I have. Thank you, Dr. Anuba. I hope to start. I'm reaching back and then I'll start and I'll keep you posted for sure. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, one thing, One- Doctor. Yes, yes. Sorry. Yeah. Yeah, one thing I have to ask, just which cheese is good for our health? I mean, which What? Cheese? cheese, yes. Which kind of cheese? Yeah. Cheese, ma'am, actually, see, healthy fats are good. Healthy fats are like, as I said, saturated fats, ghee ho gaya aapka. Then we have nuts, we have seeds. All these are sources of healthy fats, so they are actually good. But cheese thoda sa processed hota hai. But yes, once in a while or twice in a week you can have. So उसमें तो फिर जो भी options available हो, mozzarella cheese या cheddar cheese, whatever is there, you can have. Okay. Yeah. Thank you very much, Doctor. And sorry, what about kishmish and munakkas? They are rich source of sugar, carbs. Okay, so just you can top your these desserts, chia seeds wala ya fruit and nut smoothie and all. Just top it with 8-10 pieces of kishmish or munakka. That is fine. But And वो if जैसे खाते हैं ना, जब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो काजू किशमिश खाते हैं. Cashews are also very very high in carbs as well as fats. तो वो थोड़ा सा कम कंजम्पशन है, इसीलिए आपकी डाइट में I haven't given cashews. Yeah. Right? Almonds Right. are very very good to consume in any form. तभी you have your almond flour also in rotis, and you had सारे smoothies में, chia ball में, सब में आपका almonds है. Almonds आप हाँ एक चीज और कर सकते हो, जैसे बीच में आपको भूख लग रही है तो सोक करके almonds को रखे रहिए. Just keep them soaked, and whenever you feel hungry or you want to munch on something, just have 4 or 5 almonds, soaked almonds. okay, Doctor. Doctor, is it desirable if we soaked overnight this kishmish and munakkas? Definitely. You should soak it because there is Okay. phytic acid in all the nuts. So that phytic acid is actually to be leached out in water, and water has to be thrown out. So 8-10 kishmish and 4-5 munakkas are
good if we go for Ma'am, go not to daily. As I told you, okay. मुनक्का किशमिश are good source of sugar. Concentrated form of sugar हो गया ना, dried है वो. तो Okay, टॉपिंग के लिए doctor. कभी कभार you can use, but not daily. Thank you very much. हाय अनुभा। Thank you, Yes. doctor. Hi Shalini. Yes. हाँ जी, क्या हाल है? बस ठीक सॉरी ठाक. मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे कोई कुछ चीजें पूछनी थी। मेरी 3-4 दिन तक तो बहुत अच्छी चली थी, बट उसके बाद अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। कोशिश की मैंने पूरी, बट इतने अच्छे से नहीं हो पाई। मेरे को ये पूछना था, जो ये शुगर क्रेविंग होती है बीच बीच में, उसके लिए क्या है उसका, कि क्या हम कर सकते हैं थोड़ा सा शुगर क्रेविंग को रोकने के लिए? देखो, शुगर क्रेविंग शालिनी एक्चुअली इट इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ओनली, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन मेजर रीजन बिहाइंड शुगर क्रेविंग. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका ही यही है, जो आप कार्ब को थोड़ा सा कम करो. क्योंकि देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जाके ब्लड शुगर को बढ़ाता है, और ब्लड शुगर जैसी बढ़ती है इंसुलिन सिक्रीट होता है. तो जब इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होता है, उस वक्त वो उसको ब्लड शुगर को लेकर और सेल्स तक पहुंचा देता है. लेकिन अगर आप बार बार कार्ब खाओगे तो बार बार इंसुलिन सिक्रीट होगा. उससे क्या होगा कि इंसुलिन भी एक बार, मतलब एक ऐसा लेवल आएगा कि इंसुलिन भी अपना पूरा काम करना बंद कर देगा, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और विच इज द रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. एंड नॉट टू मेंशन थायराइड, बीपी, हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर, सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस. अच्छा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं कराना है. स्पाइक ना कराने का तरीका क्या है? कार्ब्स हो, ये नहीं कह रही मैं कि कार्ब बिल्कुल बंद कर दीजिए. अल्टीमेटली कार्ब के बिना तो मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्राई टू रिड्यूस कार्ब्स. और बार बार मत खाइए, क्योंकि जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार ऐसे जाएगा, फिर गिरेगा ब्लड शुगर, फिर जाएगा, फिर गिरेगा. सो ये जो स्पाइक्स हैं, इनकी वजह से क्रेविंग्स होती है. अच्छा, जो जैसे अभी ये वाला गट फ्रेंडली आटा हम अपनी डेली लाइफ में भी, जैसे उस बार हमने वो वाला किया था, इस बार ये वाला है, वो आपका तो नवरात्रि का था ना, इसमें ग्रेन्स हाँ, भी. मतलब हम वो भी यूज कर सकते हैं, कभी एक हफ्ता हाँ ये भी यूज बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल. कभी, या फिर आटे में थोड़ा सा मिक्स करके कर लिया आटे में अगर। देखो, जब डालोगे तो वो थोड़ा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि आटे में तो कार्ब होगा. लेकिन हाँ ठीक है, वंस और ट्वाइस इन अ वीक इज फाइन. हाँ, हाँ, अच्छा, एक चीज है, जैसे पहले जब आप वेट लॉस में था तो हम उसमें पनीर का कंजम्पशन कम करते थे, बट इस वाली डाइट में मैंने देखा कि पनीर. पनीर, हाँ, हाँ, पनीर पे क्योंकि फोकस देखिए कम। वही बात है ना, कि प्रोटीन का सोर्स कुछ और है नहीं यहाँ पे. वहां पर आपको सोय नगट्स वगैरह भी देती थी. ठीक है, यहाँ पर गट में सोयाबीन्स, सोय प्रोडक्ट्स और पीनट्स वगैरह हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते. जनरल गट के लिए मैंने कल भी बताया था, ग्लूटेन, डेयरी, सोय, पीनट्स और कुछ तरीके के नट्स, इनसे ज्यादातर लोगों को एलर्जीज होती है. मतलब एलर्जीज मतलब सेंसिटिविटीज. सो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड दीज व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द गट इश्यूज. ओके, क्योंकि वेजिटेरियंस के पास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन तो बहुत कम है ना. एक प्रोटीन पाउडर है, उसके अलावा आपके पास सोय नगेट्स हैं, उसके अलावा आपके पास पनीर या टोफू है. क्योंकि जितने भी लेंटिल्स, लेग्यूम्स होते हैं, वो तो कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन कम, ओके, है ना. तो इसीलिए थोड़ी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है. अब यहीं पे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, तो इवन जो एगिटेरियन है उसके पास भी काफी है भाई. एग को अलग अलग फॉर्म में खा सकते हो. प्रोटीन का इंटेक भी ठीक रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर स्टमक एसिड. तो स्टमक एसिड अगर कम हो रहा है, इसका ये भी रीजन है क्योंकि बहुत से वेजिटेरियंस जो हैं वो प्रोटीन ही नहीं खाते. द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन दे थिंक इज दाल ओनली, विच इज नॉट, है ना. तो एक बोल ऑफ दाल से आपको हार्डली 4-5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि आपको खाना कितना चाहिए? अपने वेट के बराबर 1 ग्राम पर केजी. सो इफ यू आर 60 kgs, यू शुड ईट 60 grams ऑफ पनीर पर डे. आप सोचो खुद ही आप कितना कम खाते हैं. इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स है. मसल्स नहीं है बॉडी में, मसल्स कम होंगी तो वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा. मसल्स अगर ज्यादा होंगी बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा. तो एवरीथिंग इज रिलेटेड. वैसे डाइट वगैरह कर लेते तो आप थोड़ा तो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाते हो कुछ फॉलो करने के लिए, ऐसे तो कभी जो आप अल्कलाइन डाइट का करे थे तो कभी अल्कलाइन डाइट वाला भी वो करना पूरा, कि जो बॉडी के लिए अच्छा हो, बीच में ऐसी कोई हाँ नहीं, वर्कशॉप। देखो इसमें भी ना अल्कलाइनिटी की तरफ ही थी डाइट.
वो मैं सिर्फ एल्कलाइन वाला इसलिए नहीं करना चाहूंगी बिकॉज देयर यू विल हैव लॉट ऑफ मसल लॉस। या फिर लिक्विड वाला कुछ जैसे ना वो शालिनी दैट कैन बी डन ओनली फॉर 2-3 days, अदरवाइज वो आपको मतलब यू विल लूज योर मसल्स, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में वीकनेस लेके आएगा। आप अगर 3-4 दिन प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी मसल्स ब्रेक होने लगेंगी, बिकॉज बॉडी को तो कहीं से चाहिए ना। एक्चुअली कल वाला सेशन में पूरा सुन नहीं पाई थी, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी कि डेली हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा क्या चलता रहता है। हाँ, नहीं ठीक है। आप देखो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि डोंट थिंक दैट इट इज डाइट, अडॉप्ट इट एज योर लाइफस्टाइल। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए, अगले दिन बैलेंस कर लो, एक मील में गड़बड़ हो जाए दूसरे मील में बैलेंस कर लो, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। वाटर इनटेक बढ़ाना है, वाटर इनटेक, वेजिटेबल्स इनटेक, हेल्दी फैट्स, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर लोगे डाइट में। फ्रूट एंड नट स्मूदी जितनी थी, जैसे इसमें तो एप्पल डल गया, लेकिन जैसे चिया फ्रूट एंड नट बोलता तो इसमें तो हमने इस बार कोई भी फ्रूट डाला नहीं। बट वैसे हम डाल सकते हैं ना थोड़ा बहुत, डाल सकते हो, लेकिन आधा एप्पल या हाफ बनाना से ज्यादा नहीं। और उसके अलावा फिर मिल्क, आलमंड मिल्क ही लेना है या कोई और मिल्क भी ले डेयरी सकते? मिल्क ले सकते हो, आमंड ले लोगे तो ज्यादा बेटर। कोकोनट का फ्लेवर पसंद है तो कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं। ओके, वो तो घर पे हाँ निकाल के हाँ, ले वो तो सकते आराम से बन जाता है। हाँ, हैं। लेकिन ठीक है। आमंड मिल्क इसीलिए क्योंकि आमंड मिल्क फ्लेवरलेस होता है मेनली। कोकोनट में थोड़ा सा लोगों को फ्लेवर लगता है, लेकिन स्मूदी में तो आई थिंक इट गोज वेल, देयर इज नो इशू एज सच ना स्मूदी में। या आलमंड मिल्क के साथ थोड़ा सा एक दो उसके चंक्स डाल दिए कोकोनट के, तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप मिक्स एंड मैच। मेनली पर्पस इज टू अवॉइड कार्ब्स। हाँ, कार्ब्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए, और बाकी वही है कि इसको आप जितना कर पाओ, बीच बीच में एक दिन मिस हुआ है दूसरे दिन कर लो, नेवर गिव अप। मेन तो यही गिव अप मत करो। 3 दिन मेड नहीं आई थी तो मैंने तब भी कल अपना कद्दू, आज मैं थोड़ा सा परेशान चल रही थी, तो सवेरे तो मैंने ऐसे उपमा का लिया। आज वाली डाइट मेरी फॉलो नहीं हुई, और कल गलती से नाश्ता मेरा कोई और, खाना कोई और हुआ था, तब भी मैंने कल खुद बनाया, अपना लेके गई ऑफिस। हाँ, वही कह रही हूँ ना, थोड़ा भी कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होगा। और बाकी थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अपना मेडिटेशन और ब्रीदिंग कर लो, 5 मिनट्स के ही तो हैं दोनों एक्टिविटी, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। नहीं, अभी आपने जो इसमें डाले, मैं बताया ना, मैं तो थोड़ा सा इस मामले में चोर हूँ, एक्सरसाइज और ब्रीदिंग वाले में। नहीं करो, बिलीव मी, बहुत ज्यादा डीप अगली बार ना, पता है इसको पूरा अनुभव इसको और अच्छा करेंगे, जैसे तुम जो सवेरे का वो जो शेड्यूल बनाती हो ना, उसको भी तुम ग्रुप में करवाओ, तो देखना और मजा आएगा। जो हमारे जैसे आलसी लोग हैं ना, वो भी आएंगे। हाँ ठीक है, चलो, आई विल कीप दिस सजेशन ऑफ योर्स। अच्छा, नहीं मतलब उसमें होगा ना। हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, now can we all switch on our videos so I can quickly take a picture? अनुभा जी, एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। जब हम आटे की बात करें तो ये मल्टीग्रेन हो गया, ज्वार एंड बेसन, तो प्रॉब्लम मल्टीग्रेन, क्योंकि मैंने एक बार डाइट की थी, उसमें ये कहा था कि मल्टीग्रेन नहीं खाना चाहिए बिकॉज डिफरेंट ग्रेन्स डाइजेस्ट इन अ डिफरेंट वे। मैम, वो आयुर्वेदिक डाइट होगी, आई एम श्योर। अच्छा, आयुर्वेदा वाले तो ये बोलते हैं नॉट मोर देन 2 grains एट अ टाइम, ठीक है। बट अगेन, जैसे आजकल तो मिलेट कल्चर चला हुआ है, एवरीबडी इज जस्ट रनिंग आफ्टर मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स आर डेफिनेटली लिटिल बेटर देन व्हीट, बट लेट मी टेल यू, दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स। तो ज्वार का आटा एमरांथ है जो थोड़ा सा और अच्छा है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। अदरवाइज ज्वार, रागी और आपका कौन सा होता है, बाजरा, जितने भी आप मिलेट्स ले लीजिए, सब में व्हीट जितना ही कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीग्रेन खा रहे हो, सो यू आर ईटिंग चना का आटा, यू आर ईटिंग दिस ज्वार और वट एवर, एवरीथिंग विल हैव कार्ब्स। तो वो कहीं ना कहीं बात तो फिर वही आ गई ना घूम के कि कार्ब। तो नहीं, 2 ग्रेन्स मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो इसमें तो देखिए, आपने और भी ज्यादा मिक्सिंग की है जो आपने आटे में, तो वो कुछ ऐसा चीज नहीं है कि डाइजेशन और उससे कोई फर्क पड़ता है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, यू नीड टू रिड्यूस योर कार्ब्स लोड। ओके, कार्ब्स, जिसको कि हम लोग अपने लैंग्वेज में ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, जिसका ध्यान रखा जाता है स्पेशली तब जब हम डायबिटीज वालों के लिए डाइट बनाते हैं। बट अगेन, नॉन डायबिटिक्स को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो इशू है, दैट इज द मेन
प्रॉब्लम और रूट कॉज, एज आई टोल्ड यू, फॉर एवरी डिजीज। Alright. ठीक है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अगर आप अपना कार्ब इनटेक थोड़ा कंट्रोल कर लोगे ना, तो वेट लॉस से लेकर एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। And second question is about the oil. Said कि जैसे इटालियन बनाते हैं, we use olive oil. और ऑलिव ऑयल डेफिनेटली वर्जिन यूज करती हूँ, लेकिन अब हीट करने से यू सेड ये हाइड्रोजनेटेड हो जाता हाइड्रोजन हो जाता है। So वो then what प्रॉब्लम to तो do? मैम रहेगा, वो तो रहेगा। इसीलिए घी और कोकोनट ऑयल ही सिर्फ ऐसे दो ऑयल्स हैं जिनका हीटिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर आप उनको हीट भी करोगे तो दे विल नॉट क्रिएट, मतलब दे विल नॉट गेट हाइड्रोजनेशन एंड देन दे विल नॉट बी इन्फ्लेमेटरी। Okay. हाँ, तो वो मतलब वो तो प्रॉब्लम है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम हार्ट हेल्दी ऑयल्स के नाम पे ऑयल्स यूज करते हैं, बट दे ऑल आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। स्विच ऑन द लाइट। All right, all right. हाँ, तो बेटर तो वंस इन वाइल जब फ्राइंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज हो सकता है, फ्राइंग के लिए? जी जी बिल्कुल हो सकता है, इफ यू आर लाइकिंग द फ्लेवर। और जितना Yeah, main thing is that. हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल एक्चुअली इतना फ्लेवरफुल होता भी नहीं है। आप एक दो बार करोगे थोड़ा सा लगेगा, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस आर नॉट यूज टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदत पड़ जाती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल इतना कॉमन है, फ्राइंग सारी मस्टर्ड ऑयल हाँ, तो वो मैम तभी नॉर्थ इंडिया में डिजीजेस भी बहुत है, ओबेसिटी भी बहुत है। आप देख लो, नॉर्थ इंडिया क्या, इंडिया ही पूरा डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। रीजन इज दिस ओनली ना, अमेरिका के बाद वो सारा कुछ इधर ही तो आ गया, जिसको कि स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट बोलते हैं, सैड, बिकॉज दे आर ईटिंग टू मेनी कार्ब्स, दे आर ईटिंग लॉट ऑफ दीज हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, बर्गर्स, पिज्जाज, फ्रेंच फ्राइज, एवरीथिंग हैज हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। जितनी बार आप उसको तल रहे हो उतनी बार वो ऑयल हाइड्रोजनेट ही तो हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज अवॉइड करनी है, उससे इन्फ्लेमेशन कम होगा बॉडी में, फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं वो कम होंगे। तो डेफिनेटली जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो कोई भी तरीके की डिसीजेस, इवन कैंसर्स, विल नॉट गेट एनी स्टिमुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। ओके, स्विच ऑन द वीडियोस प्लीज। अनुभा, इसी की कंटिन्यूएशन मुझे एक चीज पूछनी थी, लाइक शी took up the question for the oil. जैसे फॉर आवर किड्स, अगर हमको पूरी वगैरह बनानी है तो हम क्या यूज कर सकते हैं बेस्ट? घी? क्या बनानी है फॉर पूरी एंड ऑल? हाँ बिल्कुल, देसी घी यूज करिए, बिंदास, कोई इशू नहीं। ओके, अपने लिए भी यूज कर सकते हो वंस इन अ व्हाइल, इफ यू वांट टू ईट पूरी, जस्ट have 1 or 2 puris made in desi ghee. एंड इवन जैसे हमारी नॉर्मल जो मस्टर्ड ऑयल में सब्जियां बनती थी वो भी अब देसी घी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नो यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट ऑल। ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। वो एकदम से तो चेंज नहीं हो जाएगा जो आदत पड़ी हुई है, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्राई टू शिफ्ट ऑन देसी घी एंड कोकोनट ऑयल। ओके, थैंक यू। यस, सो आर वी ऑल रेडी? बाकी लोगों के कैमरास? यस प्लीज, थैंक यू सो मच। आज तो सबके चेहरे देखने को मिल रहे हैं मुझे। यस, थैंक यू सो मच। दिलीप सर ने नहीं ऑन किया। दिलीप सर, would you switch on your video please for just 1 minute, not more than that? Okay, so let me take a quick picture. So we have 40 members in this group, but I can see only 18. चलो कोई नहीं। And अच्छा, one announcement is that since people have joined late also, तो उसलिए जो है वी विल बी कीपिंग दिस ग्रुप ओपन फॉर 5 days more. ठीक है, सो 25th तक इवन नंदा मैम हैज आस्क्ड मी कि आप थोड़े दिन और इसको कंटिन्यू रखिए। सो द ग्रुप विल बी ओपन टिल 25th। आज 20th है, 25th अप्रैल तक इट विल बी ओपन। सो जो लोग अपनी डाइट स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने बीच में से ज्वाइन किया है, दे कैन कंटिन्यू। अदरवाइज ऑल्सो दोज हु वांट टू रिपीट 7 days, they can do so. Keep sharing your pictures, keep asking questions, there is no issues. Okay. हाँ, so there is no issue at all. हाँ, so उसके बाद भी I will not dismantle the group. Those who want to leave, they can leave after 25th on their own. तो उसमें कोई मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अपनी वॉलंटरी चॉइस है। बाकी I have already shared my
presence on social media, Instagram, FB, and YouTube. So on Instagram, I am more active because I keep sharing all the information. कोई supplements के बारे में, या जैसे gut का ही था तो gut से related बहुत information मैंने share की हुई है. तो you can just एक वर्कशॉप का भी कुछ कराओ हेल्दी चीजें बनाने का. ओके ठीक है, आपके पास बहुत सजेशंस है, आपसे मैं पर्सनली बात करूंगी. I agree with that. So just do a workshop on healthy recipes. That would be great too. Ma'am, actually healthy is a very relative word now. So whatever is healthy for me may not be healthier for So that's why it's a general healthy. to, yes. So actually the next workshop that I'm planning is on insulin resistance or type 2 diabetes reversal. तो वो मेरा थोड़ा प्लान है मई में करने का. I will keep you posted. और उसके अलावा I will be sharing one feedback form also, Google form, just 5-6 questions. So please request you all to just fill it so that I can know any suggestions for improvement. So Shalini, आप वहाँ पे भी you can give your suggestions. ठीक है. So I have made one column. Recordings आप लोगों के साथ मैंने already सारी share कर दी है. वो कहाँ पे कह रहे हो सजेशन देने को? मैं एक फॉर्म शेयर करूंगी, गूगल फॉर्म, फीडबैक फॉर्म. ठीक है, वैसे तो आप ग्रुप में भी बोल सकते हो जो भी आपके सजेशंस है, बट उसमें एक कॉलम है स्पेसिफिकली कि किस तरह की वर्कशॉप आप चाहोगे कि और आपके साथ मैं करूं. ठीक है, सो उसमें यू कैन गिव योर सजेशंस. ठीक है, ओके. ठीक है, चलिए, नाइस मीटिंग यू ऑल, नाइस टू सी यू ऑल. Thank you very much. Thank you. Thank you, doctor. Thank for you being very so much. helpful. So keep Thank you. asking the question in the group as well. There is no issue. Yeah, Thank you, just doctor. one quick thing to tell you. Yes. I love the meditation and the breathing. I used to never do it. Now I do it faithfully every morning and every evening. So thank you for introducing that to me. Yeah, thank you. And also, I love your roti, the chapati. So novel. now, It's very nice. keep using that now, from now. Yes, I will. Yes. Okay, thank you all. Good night. Thank you very much. Good night. And thank you for the prize. Thank you. Thank you so much. Thank you.